And we cut across to more visuals we're picking up. These are live visuals coming in, and straight away cutting across to what we're picking up. Now, I believe this is very close to the presidential palace in Warsaw, and I'll go across to Shavan in just a bit on that. Given the security arrangements, looks like, yes, that is the presidential palace in Poland, and Shavan will be joining us in just a bit. That's his frame on your television screens as in about half an hour or 45 minutes from now, we're expecting US President Joe Biden to arrive at the venue. He will be holding bilateral talks with his Polish counterpart, and all eyes on that particular meeting, given that several sanctions have once again been announced by United States, and Joe Biden at this point in time is calling the free world, the quote-unquote free world, to take stricter actions against Russia as far as its invasion into Ukraine is concerned. Remains to be seen what the outcome of this particular conversation and meeting will be, because remember, Poland once again has been very much right in the middle, or rather at the periphery of this conflict, because Poland is one neighboring nation that shares a long border with the war-torn nation of Ukraine. In fact, it has received several of those ordinary Ukrainian citizens as refugees and are currently taking shelter in Poland itself. So Poland also pretty much bearing the brunt of this war. And an all-important meeting is currently underway, and I could see Mradul in the frame. We're hoping to get Shavan live in just a bit. घंटे की मुलाकात में हो सकता है कि पोलैंड की धरती से जो शांति का संदेश पूरे विश्व भर में जाने की कोशिश की जा रही है, वो हो सकता है कि आज हमें देखने को मिले, लेकिन उसकी संभावनाएं जो है वो अब बहुत कम नजर आती हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक चीज़ और देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा हम भी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि पोलिश जो राष्ट्रपति हैं डूडा, उनसे जो बाइडेन की मुलाकात किस लिए महत्वपूर्ण है, ये भी दर्शकों को समझना इसलिए चाहिए क्योंकि पोलिश धरती जो है, पोलैंड की धरती जो है, सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो बाइडेन की कल एक तस्वीर आपको याद होगी, जब उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया था और मनोबल बढ़ाया था उस आर्मी का जो लगभग 1 महीने से तैनात है उस सीमा पर, जो यूक्रेन से 60 मील दूरी पर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी तक हमने देखा शरणार्थी आए। एक जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूँ कि वॉर्सो, जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं, पोलैंड की राजधानी, यहाँ वॉर्सो में मुलाकात करेंगे उन रिफ्यूजीज से, उन शरणार्थियों से जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो बाइडेन उसके बारे में डूडा से चर्चा करेंगे, वो जानकारी लेंगे कि किस तरीके की मुलाकात तैयारियां की जा रही है। So we'll keep going across to Mradul, who was live with our sister channel Republic Bharat, but quickly once again cutting across to what he's saying. और जब वो यूक्रेनियन में बोलते हैं हीरोइम स्लावा, यानी यूक्रेन की जय हो, ग्लोरी टू यूक्रेन, इस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए, कुछ हलचल हमें नजर आ रही है, जो ऑफिशियल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर जो बाइडेन पहुँचेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु युद्ध का जहां खतरा बना हुआ है, तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे विश्व की नज़र इस समय प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही है। क्या यहां से वो तस्वीर साफ हो पाएगी जो विश्व युद्ध की आहट हम देख रहे हैं लगातार? रूस की जो तस्वीरें हैं, रूस की अभी तक की जो भूमिका रही है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, हमारे पास भी जो जानकारी पहुंची है वो यही पहुंची है कि रूस लगातार हमले तेज कर रहा है, और एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ रूस के हमले तेज हो रहे हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह मुलाकात है। और देखिए, कुछ हलचल हमें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है।
कुछ कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमें नजर आ रही है, कुछ हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यहीं से उनका काफिला गुजरेगा और सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जाएगा। देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्यों लगती है? क्योंकि लगातार रूस की तरफ से धमकी दी जा रही है और इन धमकियों में परमाणु युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। आज पोलैंड की धरती से वो संदेश भी जाएगा, वो तस्वीर भी साफ हो पाएगी। इस बीच में आपको एक जानकारी और यहां पर देना चाहूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब विदेश मंत्री से मिलेंगे, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण वार्ताओं में शामिल रहे हैं और उन वार्ताओं में उस बात को लेकर उन्होंने काफी जोर दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर किस तरीके से बने या फिर सीज फायर की बात हो, क्या उसका भी यहां पर देखना होगा कि उस विषय पर चर्चा की जाएगी। लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उस बीच हमें यह भी सोचना होगा क्या आने वाले वक्त में वो तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि आप देखिए, यूक्रेन की धरती से लगातार ज़ेलेंस्की ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जज्बे के साथ मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के जवान सड़कों पर तैनात हैं, यूक्रेनी नागरिक सड़कों पर तैनात हैं और दूसरी ओर वहीं हम देखते हैं कि शरणार्थियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। शरणार्थियों की संख्या मिलियंस में पहुंच गई है। इससे हम समझ सकते हैं कि लाखों शरणार्थी जब पोलैंड की धरती पर आते हैं तो विश्व भर में क्या संदेश जाता है। मानवीय पहलुओं को समझाते हुए ये हम बताना चाहेंगे कि जो बाइडेन ने जब ब्रुसेल्स में G7 नेताओं के साथ बातचीत की थी, नेटो के तमाम सदस्यों के साथ बातचीत की थी, नेटो के ऑफिशियल से बात की थी, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वक्त में हमारी कोशिश ये होगी कि हम रशिया को रोकें, हम रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश करें। और उसी दबाव का नतीजा है कि अभी तक जो परमाणु युद्ध का खतरा है, जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, वो बहुत तेज हो जाती है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि यहां पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, तमाम विदेशी चैनल यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी भी यही कोशिश होगी कि यहां से क्या संदेश जाता है ये पूरी दुनिया में पहुंचे। लेकिन महत्वपूर्ण यही है, क्या इस मुलाकात के बाद तीसरे विश्व युद्ध पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे उसका जवाब मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक चीज और आपको समझनी होगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पश्चिमी देशों की भूमिका की, तो जो बाइडेन जो है वो लगातार अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक जो भी कार्य किया है वो रूस पर दबाव बनाने का काम करता है। लेकिन रूसी धरती से जब हम लगातार मिसाइलों के अटैक देखते हैं, बमबारी देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रशिया पर वाकई दबाव बन रहा है? और विश्व युद्ध की आहट इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रशिया अभी तक झुका नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही, क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट बनी हुई है, खतरा बना हुआ है? इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। From the presidential palace in Poland, where we're expecting Joe Biden to arrive any moment now, and Radul and Shavan keep getting us all those live updates. Now, a couple of points and what really could be discussed when talks take place between the two world leaders today. Of course, on the agenda, as Poland has already iterated that it hopes that Biden's visit will underline the security assurances that have already been made by United States that it will defend every inch of NATO territory. Now, Warsaw is of course keen to see if more US troops are stationed on NATO's eastern flank, and that's one concern of every NATO member nation. They are trying to understand how all the NATO member states are going to take this forward. What is going to be their strategy, given that Russia is now escalating its aggression, and how it's going out with nuclear saber rattling as well. Now, Poland is also likely to raise the idea of international peacekeeping mission involving troops that are being stationed in Ukraine, an idea that was proposed earlier on by one of the ruling party leaders during a trip to Kiev. That was an idea that was hinted at. Now, whether or not that will be taken forward remains to be seen. But yes, some of the things that could be on the agenda, as Republic gets you non-stop live updates, and the Live Frame, the only channel getting you non-stop live updates from the presidential palace in Poland. In fact, a quick reminder of what National Security Advisor Jake Sullivan had said when he was en route Poland. He spoke of how the president has been extremely clear, that is, Joe Biden has been extremely clear about his absolute determination to respond decisively alongside
other members of the alliance if Russia attacks NATO. So yes, United States is now doing a contingency plan for the possibility that Russia chooses to strike NATO territory in that context or in any other context, as was pointed out by the National Security Advisor Jake Sullivan. He'd also suggested that United States and its allies could still impose new measures to punish Russia for its invasion of Ukraine. Now, when the NATO summit took place in Brussels, we did hear what Joe Biden had to say as far as heightened sanctions against Russia is concerned. Now, to that, Russia has, of course, retaliated already, saying that not much of a difference is going to be felt in Moscow, and they're going to be left unaffected as far as these growing sanctions are concerned. Now, United States, of course, is also trying to find a solution on what alternative it can propose as far as the increasing oil exports from Russia to the other European nations is concerned. So that's another point that could perhaps be discussed, because this is not just about Russia and Ukraine. It involves a slew of nations, and the kind of reliance that some of the nations have on Russia is something that could also be taken up. But Moscow, on the other hand, has been calling this a special military operation. It's saying that it's not intending to disarm any of the other neighbors. It's also speaking of how Kiev and its Western allies have called it an unprovoked war of aggression. But Russia's true aim was to overthrow the government of what Vladimir Putin regarded as an illegitimate state. So that's Russia and what it is maintaining at this point in time. As opposed to that, Ukraine, remember,